गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं उन्होंने इंडियन नेवी के 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू को जो है वो एड्रेस विटनेस किया है। और ये प्रेसिडेंट का फ्लीट रिव्यू होता क्या है, तो हर बार एटलीस्ट अपने टेन्योर में एक बार जो है प्रेसिडेंट इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को विटनेस करते हैं, उसकी सिचुएशन का स्टॉक लेते हैं कि इंडियन नेवी की कैसी वॉर प्रिपरेडनेस है। तो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो एटलीस्ट वंस इन हिज टेन्योर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे जो है इंडियन नेवी की जो है फ्लीट को रिव्यू करते हैं। तो उनको एक नेवल शिप पर लेके जाया जाता है जिसको हम प्रेसिडेंट्स याक कहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स याच जो है इस बार वो INS सुमित्रा को बनाया गया है, उस पर प्रेसिडेंट को लेके जाया गया है। और उन्होंने ऑफकोर्स सारी शिप तो उनको नहीं दिखाई जाती, लेकिन हर तरह की उनको इंडियन नेवी की शिप दिखाई जाती है। और इस रिव्यू के अंदर जो है वो मर्चेंट शिप्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर मर्चेंट शिप्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, मर्चेंट शिप्स का भी रिव्यू किया जाता है। ठीक है। अब आज तक 11 ऐसे प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू हो चुके हैं इंडिपेंडेंस से लेके आज तक के। ऑफ कोर्स ये अब जो है ये 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू था। सबसे पहला जो है वो 1953 में हुआ था अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे। जो उससे सेकंड वाला था वो प्रेसिडेंट ने रिव्यू नहीं किया था, जो है उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर थे YB चावन जी जो है 1964 में, उस टाइम पर उन्होंने प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू जो है उन्होंने किया था। ठीक है। जो लास्ट वाला था वो 2016 में हुआ है जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी थे। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। तो ये इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज सिक्स्थ जो है वो कंडक्ट की गई है अभी रिसेंटली। और ये एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में इसको कंडक्ट किया गया है। तो ये सिक्स्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज है। इससे पिछली जो एक्सरसाइज थी वो 2019 में हुई थी, वो एयरफोर्स बेस जो है ओमान का मसीरा, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन दीज टू आर्म्ड फोर्सेज, इसके लिए जो है ऐसी जॉइंट एक्सरसाइजेज की जाती हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए उसके अंदर एक इवेंट रखी थी जिसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि 18 फरवरी 1905 में बनी थी, उसको जो है वो रिकॉल किया है इस इवेंट के टाइम पर। तो अब इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में देखते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इंडियन होम रूल सोसाइटी को फाउंड किया था। इसके कुछ मेंबर्स और थे, भिकाजी कामा जी, दादा भाई नारोजी, सरदार सिंह जी रावा जी, SR राणा। ठीक है। तो ये सब जो है इंडियन नेशनलिस्ट ब्रिटेन में जो थे वो इसके पार्टिसिपेंट्स बने थे। तो ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ब्रिटिश एक कमेटी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उसकी एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो उसका एक अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और वो इंडिया के लिए एक होम रूल जो है वो सिक्योर करना चाहती थी। ठीक है। इसके सिर्फ मेंबरशिप इंडियंस को के लिए ही ओपन की गई थी, और यंग इंडियन एक्टिविस्ट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बनाकर रखते थे। ठीक है। तो अब इसमें छोटा सा एक बैकग्राउंड भी है कि PM मोदी जब गुजरात के CM थे तो वो स्विट्ज़रलैंड से जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की जो एशेज़ थे उनको वापस लाए थे। और अभी रिसेंटली जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है उनको रीइंस्टेटमेंट सर्टिफिकेट भी मिला था UK से, जब PM मोदी जो है वो 2015 में उन्होंने UK में विजिट किया था। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ जो है वो यूरोप के, एशिया के या और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के, उनके साथ एक 1-to-1 मीटिंग की है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के टाइम पर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या होता है। तो ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में डिस्कशंस होती हैं। जैसे अब आपको बताया कि हमारा जो है वो यहाँ पर रायसेना सीरीज़ भी होती है। फिर हमारे जो है आपने सुना होगा कि शंग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में।
फिर आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए होता है, मतलब इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए होता है, तो वैसे ही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को डिस्कस करने के लिए म्यूनिक में होता है। म्यूनिक जो है वो आपका बेवेरिया प्रोविंस में पड़ता है, जर्मनी के, और 1963 से इसको कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब याद रखो, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी नहीं कंडक्ट कराता है इसको, ये एक इंडिपेंडेंट फोरम है, ठीक है। तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट फोरम है, इसका गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें 350 सीनियर फिगर्स जो है वो आती हैं हर साल, जो इसमें 70 कंट्री से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इसमें होती है। हर साल ये फरवरी में कंडक्ट किया जाता है, और ये एक ही जगह है, होटल बेल्शर हॉफ, जो कि म्यूनिक में है, वहाँ पर ही हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है। जैसे इस साल जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो 21 फरवरी को जो है वो हर साल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इलिटरेसी के खिलाफ, रिलीजियस या फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, रेस एंड एथनिसिटी, इन सब के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये एक यूनिवर्सल कॉल देता है यह डे कि हमको पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को जो है वो एड्रेस करना है, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है नवीन चंद्र सेन जी, ठीक है। तो ये एक बंगाली पोएट थे और राइटर थे, और इनकी 175th बर्थ एनिवर्सरी पर जो है नेशन इनको रिमेंबर कर रहा है। तो इन्होंने बोला था कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई और जब ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ, तो उसको उन्होंने कहा था कि ये अ नाइट ऑफ एटर्नल ग्लूम है, ठीक है। उनकी एक नॉवल थी भानुमति, और उन्होंने प्रभसेर पत्र भी लिखा था, जो उनके मेमोयर थे, जो उन्होंने ट्रैवल किया था उसकी एक तरह से मेमोरीज थी प्रभसेर पत्र। और उन्होंने अपनी एक 5 वॉल्यूम ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, जिसका नाम है अमार जीवन, जो कि बंगाली में हुआ। अमार जीवन मतलब माई लाइफ, ठीक है। तो ये उनकी लाइफ के बारे में था, उनकी पॉलिटिकल और सोशल एस्पिरेशंस, जो कि बंगाली लिटरेटी जो है उन लेट 19th सेंचुरी में कैसा बंगाल का लिटरेचर था उस टाइम पर, उनके कैसी पॉलिटिकल और सोशल एस्पिरेशंस होती थी उस जो है बंगाली लिटरेटी की, तो उनके बारे में डिस्कशंस इसमें भी बताई गई हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्शन सिंबल्स। तो अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है, आपको कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इलेक्शन सिंबल्स रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ पीएम मोदी ने कुछ स्टेटमेंट दी है इलेक्शन रैली के टाइम पर। तो हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है इलेक्शन सिंबल्स। तो इलेक्शन सिंबल्स जो है, उस इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो कैंडिडेट्स को या पार्टीज़ को सिंबल्स अलॉट करता है। और एक पर्सन अगर कोई किसी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको पार्टी का सिंबल ही मिल जाता है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या फिर कोई अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट है, तो उनको जो है एक लिस्ट होती है इलेक्शन कमीशन की, फ्री सिंबल्स जो कि अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट होती है। उसमें से उनको 3 सिंबल्स चूज़ करके इलेक्शन कमीशन को बताने पड़ते हैं कि इनमें से हमें कोई सिंबल दे दिया जाए। फिर ऑटोमेटिकली जो है ईसी अपनी चॉइस करता है उन 3 सिंबल्स में से, और जो है वो अगर फ्री हैं वो सिंबल्स ऑफ कोर्स, तो उनको वो सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है। अगर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको ये भी एक राइट है, अगर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को, कि वो अपना एक सिंबल रिजर्व कर ले, ठीक है। जैसे आप समझ लो, एग्जांपल लेते हैं कि टीएमसी है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस है, वो पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ती है, ठीक है। लेकिन उनका जो सिंबल है, क्योंकि वो एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं कि हम हो सकता है फ्यूचर में कभी पंजाब में इलेक्शन लड़ें, तो आप हमारा सिंबल हमारे को रिजर्व करके रखो पंजाब में, प्रोवाइडेड इसकी कंडीशन क्या है कि वो सिंबल जो है तृणमूल कांग्रेस का, वो ऑलरेडी कोई रूल उस टाइम पर जब उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है तब वो कोई और अगर यूज़ नहीं कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन वो सिंबल जो है वो रिजर्व कर देगा तृणमूल कांग्रेस के लिए। वो बाद में जब जब चाहे वो चुनाव उस सिंबल पर फिर पंजाब में लड़ सकेंगे, ठीक है। अब जो है एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ का सेम सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, अगर वो अलग अलग स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हो, जैसे फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर और डीएमके जो है आपके तमिलनाडु के, उनका सेम ही सिंबल है राइजिंग सन। लेकिन अगर ये आपस में समझ लो फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर या फिर डीएमके जो है अगर मणिपुर में इलेक्शन लड़ने जाएगी, तो उनको अपना सिंबल बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर जो है उनको सिंबल वहाँ पर वो मिला हुआ है, ठीक है। अब जो है ये सिंबल क्या लूज भी हो सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंबल छीन भी सकता है। तो अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है
किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे रीज़न ये हो सकता है कि उनको 6% तक के वोट्स जो है वो नहीं मिले, या 2 सीट्स वो नहीं जीत पाए स्टेट इलेक्शंस में, या फिर अगर कोई नेशनल पार्टी है तो उनको 6% वोट्स नहीं मिले और 2 एमएलए जो हैं वो एटलीस्ट 4 स्टेट्स में उनके नहीं हो पाए, तो उनको डी रिकोगनाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो 1997 तक तो जो ये प्रोविज़न था कि अनरिकोगनाइज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सिंबल भी जो है वो चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद 97 के बाद ईसी ने अपने ऑर्डर को मॉडिफाई किया और कहा कि नहीं, आप जो है इवन अनरिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर उनको एक बार सिंबल मिल गया तो वो उसको रिटेन कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में वो अनरिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएँ और वो दोबारा से रिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाएँ। तो इसलिए उनको सिंबल रिटेन करने के लिए जो है वो अलाउ कर दिया गया है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is President's Fleet Review. So President Ramnath Kovind has taken part in Indian Navy's 12th Presidential Fleet Review. So this is a routine which happens under every presidents at least once, and this is basically the president witnessing or taking the stock of Indian Navy's capability, because you know that Indian president is also the supreme commander of armed forces. So president is generally taken on one of the naval ships, like this year INS Sumitra was chosen, and this ship is called the president's yacht. Okay, so on this onboarding this president's yacht, the president witnesses the preparedness or the capabilities of Indian Navy at least once under his tenure. So, of course, not all Navy's ships participate in this President's Fleet Review, but at least one, every type of ship is shown or witnessed by the President. And there is a very important point here that this review also includes even merchant ships. Okay, so President also reviews the merchant ships. So how many of these reviews have been held as of now? So about 11 presidents fleet reviews been have occurred since independence, and of course this was the 12th one that President Ramnath Kovind has witnessed. So the first one was conducted in 1953 when Dr. Rajendra Prasad was the president of India. Later on, the second one was of course not done by the president, but by the then defense minister YB Chavanji in the year 1964. The last president's fleet review happened in 2016 under President Pranab Mukherjee ji. Okay, so now let us see the next topic, which is Exercise Eastern Bridge. So this is basically an exercise between Indian Air Force and Oman's Air Force, and this is the 6th edition of this exercise. The last edition was, that is the 5th edition, was conducted in 2019 at the Air Force base of Oman, that is Masira. And these exercises, you know that they are done to enhance operational capability and interoperability between the two air forces. Okay, so now let us see the next topic, which is Indian Home Rule Society. So you know that India is celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav, and under this Mahotsav, Government of India has recently organized an event to recall the foundation of Indian Home Rule Society in London, which occurred on the 18th of February 1905. So of course it was founded by Shyamji Krishna Verma, but of course there were other prominent Indian nationalists in Britain who participated in this Indian Home Rule Society. That is the Bhikaji Kama, Dada Bhai Nehruji, Sardar Singh ji, Rawaji, S.R. Rana ji. Okay, so all these participated in Indian Home Rule Society. So this was basically a rival organization to the British Committee of Indian National Congress. You know that Indian National Congress was also tried to be set up in London, but of course this was different from the one that was there in India. So this Indian Home Rule Society was a rival organization to that planned British Committee of Indian National Congress. So Indian Home Rule Society was basically a metropolitan organization. It had a written constitution and it aimed to secure home rule for India. Okay, so its membership was open only for the Indians, and it recruited young Indian activists, and it also maintained close contact with the revolutionary movements in India. Okay, so there is a small background to it. PM Modi, when he was the Chief Minister of Gujarat, he brought the ashes of Shyamji Krishna Verma back to India from Switzerland in 2003. He even got the reinstatement certificate of Shyamji Krishna Verma from UK when he visited there in 2015 as the Prime Minister of India.
Okay, so now let us the next topic, which is Munich Security Conference. So you know that EM Dr. Jaishankar ji participated in this Munich Security Conference, where he held a series of one-to-one meetings with several ministers from Europe, Asia, and other parts of the world. So for us, this topic becomes important because this is an annual conference on international security policy. You know, like India conducts this Raisina dialogue, Singapore conducts this. Shangri-La dialogue. Similarly, this Munich Security Conference, of course, it is an independent one. Otherwise, this Rise and a dialogue is done by the government of India with, of course, ORF. But this Munich Security Conference is an independent forum. It has no direct or indirect participation from the government of Germany. It is an independent forum where the international security experts and government figures, international organizations, ministers, members of parliament, or high-ranking representatives from the security domain, as well as business and media participate. About 350 senior figures participate in it, representing more than 70 countries. So this is being held since 1963 in Munich, that is in Bavaria. Bavaria is the province where this Munich is located. So it is held in Germany since 1963, and it is held annually in the month of February. The venue remains the same. The Hotel Bayerischer Hof is the location where this Munich Security Conference is held annually. Okay, so now let us the next topic, which is World Day of Social Justice. So this day is observed on 20th of February each year. This year's theme is achieving social justice through formal employment. So this day is basically aimed to raise voice against social injustice and address issues like illiteracy, religious and physical discrimination, poverty, race, and ethnicity. So in 2007, of course, the UNGA declared this day as World Day of Social Justice, and this day is basically giving a universal call for social justice. And so by addressing the issues of poverty and inequality, we can uh, address the issue of social injustice. Okay, so now let us the next topic, which is Nabin Chandra Sen. So the nation is remembering the Bengali poet. He's a revolutionary Bengali poet and a writer, Nabin Chandra Sen ji, on his 175th birth anniversary. So he described the Battle of Plassey, that is the arrival of British rule in India, as a night of eternal gloom. So he's famous for Bhanumati, that is his novel, and he recorded his memoirs of his travels in Prabhaser Patra. It brought him fame. So he also wrote his own, of course, autobiography, that is Amar Jeevan. Amar Jeevan in Bengali, in English means my life. So his autobiography basically chronicled the political and social aspirations of the then Bengali literati of that late 19th century. Okay, so now let us the next topic, which is election symbols. So you know that there was a controversy when Prime Minister Modi was addressing an election rally in Hardoi. So this we do not need to go into that controversy, but we have to see what is the issue of this election symbol, how they are granted by the EC. So according to Election Symbols Reservation and Allotment Order of 1968, the Election Commission allots symbols for anyone who is contesting polls. So if a person is contesting on behalf of a recognized political party, of course the person will inherit the party's symbol. But in case the person is contesting as an independent candidate or contesting on behalf of an unrecognized political party, the person has to approach the election commission and get a symbol from the list of free symbols available. So what happens is that the person chooses three symbols and submits the same to with his nomination paper, and the EC then chooses one out of those three choices made by the candidate, and that particular symbol is allotted to him, to the candidate. Okay, so in case of course a recognized political party, the election commission allows the recognized political party to reserve a symbol. Like I was giving you an example that Trinamool Congress does not fight Punjab elections, but it can ask election commission to reserve its symbol in case in future it wants to participate in Punjab elections. Okay, so if there is no one who is fighting on a similar symbol like that of Trinamool Congress, then EC can reserve that symbol for Trinamool Congress, so that in case
Trinamool Congress wants to fight elections in Punjab in the future, then it can, of course, use that symbol. Okay, so of course, if there is already someone using it, then in that case, the party cannot reserve its symbol here. So, two or more recognized political parties can also have the same symbol. So, how is it possible? So, let's see that if they are not in the same state, or if they are not in the same union territory, they can fight on the same symbol. But of course, if let's see, this is the example, like Federal Party of Manipur and DMK of Tamil Nadu, they have the same symbol of rising sun. But let's say DMK tomorrow decides to fight Manipur elections, then they would have to use another symbol, because this rising sun is already taken by Federal Party of Manipur, or vice versa. Okay, so can election commission cancel the symbols of political parties or candidates? So generally, there was a rule which was changed, but now let's see this rule. So this election commission of India can recognize a political party. You already know that if that party has not polled at least 6% of votes or won at least 2 seats in the state elections. So in case of course, a national party, it should have polled minimum 6% votes, and at least 2 MLAs must have been elected in at least 4 states. But until 1997, unrecognized political parties would lose their symbols. But in 1997, the Election Commission decided that even these unrecognized political parties can retain their symbols. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.